Hello, good evening, my dear students, and welcome to my channel Techie Krish. And today I'm going to discuss a different concept in binary file that I'll be writing the records repeatedly in the binary file. See what happens when we use a dump statement repeatedly, and what difference uh, we'll see while reading the records from the binary file. So, without wasting time on this discussion, let's move to our ideally. So here, I'm creating one file. So import pickle, then def create data, and opening the file app is equal to open. This time I'm going to take another data file, say emp.dat, and file mode is wb. So nothing is changed. Same way, I'm going to create the file, or you can say I'm going to write the record from very sketch. And this time, the dumping of record is different. I'll dump the record every time, as and when I enter the record, I'll write it to onto the binary file. Okay. So for that, I'm going to take one loop while true. Say employee number int input employee number. Second is name input employee name. Employee name, and then designation input employee designation. Salary is equal to int input employees salary. Employee salary, and then I'm making it a list. So I'm taking a list. Record is equal to employee number, then employee name, and then designation, then salary. So this the list is created, and this time I am going to dump this record directly. So pickle dot dump record comma file. Now you'll observe that मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड दे रहा हूँ और रिकॉर्ड लेने के बाद सीधा इसको डंप करा रहा हूँ. इसका मतलब है कि as long as this loop is continued,
it keeps on taking the records and dumping the records onto the file. Okay, so as many records we are giving, and so many number of times, or that many number of times dump is executed. Okay, and then yn is equal to want to have more records. So if yn in no, then simply say break and बाहर आकर के just closing the file dot close. Okay, and अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ. क्रिएट डेटा, ये मेरा फंक्शन यहाँ पर रन हो रहा है. और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से मैंने लास्ट जो हमने अभी तक प्रोग्राम किए हैं उसमें the records were stored in the shape of list of the lists, and this time I am taking single list. Every time I am dumping one list, so this is not list of the lists, individual list. Okay, so यहाँ पर मैंने इसको कराया रन. Dump repeat, the name of program, dump repeat. Employee number say 101, Narendra Singh. Employee designation say is clerk. Salary say 5,000. Yes. What happened? Let me check once again. If yn is equal to none, then app dot close. Want to have more records. When I say yes, yes, तो break नहीं होना है. Yn in n. If yn in n, want to have what is the issue? I'm not able to get it. Sally name and dump भी हो गया. Want to have more records. If I say okay, I'm initializing this variable. Yn is equal to okay, input लगाना भूल गया. Input. Now again, employee number say 101, Narayan Singh, clerk, salary 5,000. Yes. 102, Suchitra Sharma, receptionist. Salary 8,000. Yes. 103, Rahul Parashar, designation manager. Salary say 12,000. Yes. 104,
Sahil Chaturvedi, designation accountant 9,000, and now I say no. So it means I have entered four records, and four records any her time per, just as I have entered one record 101, then the entire record is dumped into the file. Again I have taken new record 102, this record is again dumped. So I have entered four records, and four times I dumped these records. Okay, so the data file which is I'm having m dot dat is having four records, and these records are dumped four times. So dump statement is used four times. Okay, so this time I am making it comment. Now I am using def read data. F is equal to open m dot dat rb, and data is equal to pickle dot load f. Now if I say print data simply, or I say for d in data and print g, और इस बार जो है मैं यूज कर रहा हूँ read data, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा इसमें करूंगा इसको f dot close. Now run. Okay, you see there is only one record 101 Naren Singh clerk 5000, यानी केवल एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर रीड हुआ. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि we have written the records and we have used dump statement multiple times, and over here I have used read data or pickle.load only once. It means I'll have to use loop. Okay, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, loop चलाता हूँ, while true colon and data print d, and because मुझे नहीं पता ये कितने बार लूप चलेगा, सो इसके लिए मुझे पास क्या है, केवल और केवल एक ही वेरिएबल है और एक ही लूप चल रहा है. तो इससे क्या मुझे ये जो है एंड ऑफ फाइल यूज करना पड़ेगा. तो एंड ऑफ फाइल यूज करने के लिए व्हाट शुड आई डू, आई शुड यूज ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड एक्सेप्ट while data
यानी मुझे ये जो है बार बार रिपीट करना पड़ेगा जो डंप है, क्योंकि मैंने बार बार लिया है। तो इसके साथ ही साथ मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, देन f डॉट क्लोज। एंड जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूं कि अगर मैं इसको लेता हूं बाहर, जैसे कि पहले प्रोग्राम्स में लेता रहा हूं, पहले मैंने डेटा लोड किया, उसके बाद जितना डेटा है उसको मैंने प्रिंट कराया। तो अब देखते हैं क्या होता है। रन। सो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। आई हैव टू ब्रेक दिस। तो दिस इज कीबोर्ड इंटरप्ट। इसका मतलब ये है कि केवल एक ही रिकॉर्ड रीड हुआ है। यहाँ पर ये देखें, एक ही रिकॉर्ड रीड हुआ, जबकि जो हम पहला जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे लिस्ट ऑफ द लिस्ट, उसमें जैसे ही हम इसको यूज करते थे तो पूरी लिस्ट ऑफ द लिस्ट कंप्लीट जो जितने रिकॉर्ड्स होते थे लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे रीड करता। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उठा करके लेता हूँ इस जगह पर। तो आप ये देखेंगे ये हर बार लोड करेगा। ये देखिए, उसने हर बार इसको लोड किया, यानी जितने बार मैंने डंप किया था उतने ही बार यहाँ पर इसको लोड करना पड़ा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इसको बजाय लूप के डायरेक्ट प्रिंट ही चला दूं। ये इधर रीड किया और सीधा मैंने इसको प्रिंट करा दिया। हर एक बार में एक डेटा मैंने प्रिंट कराया। रन। देन यू सी all the records are in list form. So here there are 4 lists, but these lists are independent lists. We have not appended list to the list. So in this case, you have observed that I am taking one loop and repeatedly I am loading the data from the binary file. So this time we have used a load function multiple times. Multiple times मतलब जितने records हैं उतने टाइम्स ये लोड चलेगा, यानी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाएगा तब तक ये लेता रहेगा। या हम यहाँ पर एंड ऑफ फाइल एरर भी कर सकते हैं, देखते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। तो एंड ऑफ फाइल जैसे होगा वैसे ही वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, और ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि आप लिस्ट ऑफ द लिस्ट लेकर के चल रहे हैं या फिर सिंगल रिकॉर्ड एक ही बार में आप डंप कर रहे हैं। तो जितने as many as records you give, every time it uses dump. So if you have entered 50 records, dump will be used 50 times. If you enter 10 records, dump function will be used 10 times. And if you use list of the lists, then only once you have to dump all the records, or you can use dump only once if you are using list of the lists. So this is the difference. Hope you like it. I hope you understand the concept of creating the binary file using multiple dumps. So if you understand the concept, kindly share it with your friends and like the video and subscribe the channel and press the bell icon so that you get the notification of new video as and when it is uploaded. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye.